आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग शेप्स कट कर ले, जैसे कि मैंने यहाँ पे कट किए हैं सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर। जैसे कि मैं इसमें वर्ड्स लिख रही हूँ, वैसे ही आप भी अपनी थीम के अकॉर्डिंग वर्ड्स लिख ले जो कि आपको रिक्वायर्ड है। जैसे कि मैंने इसमें एंटरटेनमेंट वर्ड लिया है और उसमें से वर्ड्स निकाल के अलग न्यू वर्ड्स बनाए हैं। आप भी अपने थीम के अकॉर्डिंग वर्ड ले सकते हैं कोई भी और न्यू वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।